हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस। चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर अमंग ऑल द हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स, जिससे ज्यादा से ज्यादा जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं जो अपने मीडियम को हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करना चाहते हैं, जिससे कि उनके सिलेक्शन के चांसेस और ज्यादा एनहांस हो सके, इंक्रीज हो सके। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा, इज इट रियली पॉसिबल टू चेंज द मीडियम फ्रॉम हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम डिस्पाइट हैविंग स्टडीड फ्रॉम द फर्स्ट क्लास टू द इंटरमीडिएट और इवन टू द ग्रेजुएशन थ्रू आउट इन हिंदी मीडियम? इज इट स्टिल रियली पॉसिबल टू चेंज द मीडियम फ्रॉम हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम? Yes, the answer is yes. It is 100% possible to change the medium from Hindi medium to English medium. Now, the next question must have come to your mind is that if it is possible, then how it is possible? How it is possible? What are the ways? What are the methodologies? What are the techniques through which we can change our medium from Hindi medium to English medium? There's only one thing, that we'll have to work extremely hard for at least 1 to 2 months, right? अब क्या करना है? सबसे पहले कि what to do? What are those things that one needs to follow to change the medium from Hindi medium to English medium? देखिए, सबसे पहले आपको ये सोचना चाहिए कि जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होता है और जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट होता है, जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट क्या होता है, व्हेन एन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट गोज टू स्कूल, व्हाट हैपेंस दैट all the communication between a faculty member and all the students in the school happens only in English medium. तो इंग्लिश मीडियम का जो स्टूडेंट होता है वो ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश को सुनता है। हिंदी मीडियम में ये चीज मिसिंग है। बाकी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स आर परफेक्टली गुड, राइट, बट जो एक एनवायरमेंट गेट्स क्रिएटेड, वो जो स्कूल में एक एनवायरमेंट हो जाता है, बन जाता है, तो आप इंग्लिश में ही सुनते हैं, फिर इंग्लिश में ही आप लिखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप याद करते हैं, एग्जाम के भी आप हर चीज की प्रिपरेशन भी आप इंग्लिश में करते हैं। देन यू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, क्योंकि आपको इंग्लिश में ही बोलना है, इंग्लिश में ही पढ़ा है, राइट। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वी विल बी लर्निंग इंग्लिश थ्रू सम स्टोरीज, राइट। सो हियर फॉर द यूपीएससी प्रिपरेशन द हिंदू न्यूज़पेपर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल्स, राइट, जो कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट मोस्टली स्किप कर जाते हैं, क्योंकि ऐसा हवा बना दिया, इतना फियर बहुत ज्यादा बना दिया गया कि हिंदू नहीं पढ़ सकते आप, ठीक है ना। बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप अगर किसी भी अगर आपने मान लीजिए किसी भी हिंदी मीडियम की कोचिंग में अगर आपने लिया है एडमिशन, ठीक है, तो होगा क्या, वहां पे आपको उसको ट्रांसलेट करके दे देंगे, तो आपकी खुद की मेंटल फैकल्टी डेवलप नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम इसको रीड करेंगे एक स्टोरी की तरीके से, जिससे कि हमें याद रहे कि अगर ये जो हमारा जो न्यूज़पेपर है उसको पढ़ने का क्या मतलब, क्या है, क्या पर्पस है, क्यों पढ़ें, व्हाई शुड बी रीड द न्यूज़पेपर, राइट। ये हमारा इंपॉर्टेंट है, किस किस तरीके से हम इसको एग्जाम में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारे यूपीएससी के सिलेबस में आता कहां है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा द हिंदू एडिटोरियल है 11th of April का, और जिसका हेडिंग है फिनलैंड्स जर्नी फ्रॉम न्यूट्रल टू नेटो, ठीक है ना। दिस इज द हेडिंग ऑफ द एडिटोरियल। अब जब भी आप एडिटोरियल को ओपन करेंगे, ठीक है, तो हम इसको एक स्टोरी की तरह पढ़ेंगे, जिससे कि आपके माइंड में एक स्टोरी रह जाए कि ये है क्या। उसके बाद यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग समथिंग ऑन इट, जो भी आपके माइंड में आता है, एंड यू कैन राइट ऑल्सो समथिंग व्हाटएवर यू वुड लाइक टू राइट। जैसे आपको मैंने इसको समझाया, आपके माइंड में कुछ ना कुछ तो स्टेट, हर एक बात तो नहीं आएगी, बट एटलीस्ट जो इसका सेंट्रल आइडिया है, जो इसका थीम है, वो आपके माइंड में स्टे करेगा, राइट, वो रुक जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये जो नंबर आप देख रहे हैं 7080507433, इस पर आप एक शॉर्ट नोट्स बना करके आप इस पे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। तो व्हाटएवर द मिस्टेक्स वुड बी देयर, सो आई विल बी रिफ्लेक्टिंग बैक ऑन यू, ऑलराइट। और उसके बाद इंग्लिश स्पीकिंग में भी आपको एक वॉइस नोट्स को बना करके सेंड करना है, जिससे कि आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को एनहांस कर सकें स्लोली। आपको ऐसा नहीं करना ही टेक्स टी और वो टेक टी, फिर ये वो छोटे छोटे सेंटेंसेस को करके ना, ये तो सबको आपको आता है, इतना तो आता ही है सबको, ठीक है ना। बट आपको एक छोटे छोटे सेंटेंसेस को एक आपके माइंड में स्टोरी आ जाएगी। अभी क्या है, अगर मैं आपसे बोलूं कि यू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, एनीथिंग व्हाटएवर यू लाइक टू स्पीक, यू स्पीक समथिंग, बट देन यू से आई एम ब्लैंक बिकॉज यू हैव नथिंग इन योर माइंड राइट नाउ, राइट, you are completely blank. But now after having understood this particular editorial, we will be having a story in our mind, right? So on that particular story we can speak something, right? So okay, so here now how I will be studying, okay, so how I and you will be studying this together to understand that what is the meaning and why we should read this. So first of all, when you are opening any newspaper, and let's say example the Hindu newspaper you have opened, okay, and now you want to read the editorial, okay, so you have opened the editorial page, okay, so now I will be speaking more and more in English, ठीक है ना। मैं इसको रीडिंग करके भी बताऊंगा आपको, और इसका मीनिंग भी मैं आपको समझाऊंगा इंग्लिश में ही बोल करके, ठीक है ना, क्योंकि हिंदी में तो आप समझ ही लेंगे, बट इंग्लिश में मैं आपको समझाऊंगा। आप अपने आप को खुद ही चेक करके देखिए कि कितना आपको समझ में आ रहा है, ऑलराइट। अगर आपको समझ में आ रहा है जितना मैंने इधर से बोला, अगर मतलब जो भी, अगर आप मान लीजिए 50-60% भी आपको समझ में आ रहा है, तो 100% आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं इंग्लिश में इसको रीड करूंगा, इंग्लिश में ही मैं आपको उसको सिंप्लीफाई करके सिंपल इंग्लिश में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा मैं यही कोशिश करूंगा कि मैं इंग्लिश में बोलूं, जिससे कि आपके सुनने की हैबिट जो है हो सके, डेवलप हो सके, ऑलराइट, और एक स्टोरी के फॉर्म में, ठीक है ना। और इससे पहले के भी जो मतलब कुछ इंपॉर्टेंट हमारे इसी रिलेटेड मतलब आए हैं, ठीक है ना, इसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो हमारे हैं ना एडिटोरियल, उसके बारे में भी आई विल बी डिस्कसिंग इन समथिंग टू कनेक्ट इट, ठीक है ना, जिससे एक स्टोरी हमारे माइंड में आए, ऑलराइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज द हिंदू एडिटोरियल 11th of April, Finland's journey from neutral to NATO. So whenever
we start reading any editorial of any newspaper, okay, so first of all we have to see the heading. Okay, what is the meaning of this particular heading? We should understand the meaning. So first of all we should just try and understand the meaning of this particular heading. If we are able to decode, if we are able to understand that what this particular heading wants to convey to us, we will be having some kind of idea that okay, this particular editorial is going to be talking about something like this, right? So now we have to read this. Okay, Finland's journey from neutral to NATO. Okay, so this is like neutral to NATO. So now Finland is the name of the country, right? We can easily understand Finland is the name of the country. Finland's journey, Finland की जो यात्रा है, from मतलब से होता है, ठीक है ना? Finland की जो यात्रा है from neutral to NATO. So neutral मतलब क्या होता है कि ना तो मैं ए को सपोर्ट करता हूं, ना ही मैं बी को सपोर्ट करता हूं. सो दैट मींस मैं यहां हूं, दैट मींस मैं न्यूट्रल हूं, ठीक है ना? न्यूट्रल हूं, ठीक है ना? न्यूट्रल टू नेटो. अब ये क्या होता है? नेटो क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना? फिनलैंड ने अभी इसको ज्वाइन किया है. कब ज्वाइन किया? 4 अप्रैल को ज्वाइन किया है. तो इसको क्या बोलते हैं? 31st. ये 31st कंट्री है, ठीक है ना? अब ये जो नेटो है इसमें 31st मेंबर है अभी तक, ठीक है ना? 31st मेंबर है, ठीक है? सो नाउ वी विल बी रीडिंग इट एंड वी विल बी अंडरस्टैंडिंग इट ऑल्सो ऑल टुगेदर, राइट? सो नाउ हियर वी हैव गॉटन एन आइडिया दैट फिनलैंड, दैट दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल इज गोइंग to be talking about the Finland and NATO and the journey of the Finland basically from neutral to NATO. means कुछ भी था या हमें समझ में नहीं आ रहा कि इसका मतलब होता क्या है न्यूट्रल का मतलब, ठीक है ना? जब आप स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टाइम, जो भी एकदम बिल्कुल नंबर 1 टाइम स्टार्ट कर रहा है फर्स्ट टाइम, उसको लगेगा न्यूट्रल क्या है, नेटो क्या है. सो आपको इतना समझ में आया, एटलीस्ट यू हैव नाउ सम आइडिया इन योर माइंड, राइट? सो नाउ लेट अस स्टार्ट रीडिंग. ओके, on April 4, 2023, Finland joined the NATO. Okay, on April 4, 2023, Finland joined the NATO, becoming its 31st member. So this is an important fact you should note down. All right, 31st member. So undoubtedly, this is a significant event given that NATO security guarantees will extend to this country, which shares a 1,340-kilometer border with Russia. Now here Russia also comes. Now we should just try to understand that this 1,340 kilometers border sharing with Russia. So this particular, so suppose here is the Russia, all right, and here is the US, and this is the European continent, okay, and here is somewhere the Finland, okay, and this Finland is sharing the 1,340 kilometers border with Russia. Now why this particular thing is important over here? We should be asking to ourselves, because when we are reading something we should be keep on asking to ourselves that why we are reading this, right? What kind of benefits are we going to draw out of this particular editorial? Where are we going to be using it? So this is the general studies paper 2nd, where international relations as a topic is mentioned, right? So we'll have to study this particular editorial for that particular topic to prepare and to write into the examination whenever the question is asked. All right, so now here is the US, here is the Russia, and this is the Finland, and this is the European continent. All right, so now US is there. So US is basically more dominant in the NATO, okay, and now Finland, which is sharing the border, which is like 1,340 kilometers long. All right, so this border, so here now the Russian concerns are aggravated. Now Russia is more concerned that, see, here the US is supporting the Ukraine. US has just given $30 billion as a military assistance. जैसे आप किसी होटल में जाते हैं ना, तो वहां पे बोलते हैं हाउ मे आई हेल्प यू सर, आपको कौन सा रूम लेना है, क्या खाना है ना? तो असिस्ट करना, सिर्फ असिस्ट करने के लिए $30 बिलियन, मतलब अगर आप उसको इंडियन रुपीस में अगर आप उसको देखें कन्वर्ट करके, तो $30 बिलियन वुड बी समवेयर अराउंड 240,000 करोड़ रुपीस. इतना पैसा यूएस ने सिर्फ असिस्टेंस के लिए दिया है, ठीक है ना? तो सोचिए यूएस इतना हेल्प कर रहा है यूक्रेन को, ठीक है ना? और यूएस ही हेड है एक तरीके से नेटो का. अब ये जो कंट्री फिनलैंड है, जो इसके बॉर्डर में है, ठीक है ना, जिसका बॉर्डर 1,340 किलोमीटर का है, हैज आल्सो ज्वाइंड द यूएस फोर्स, मींस बेसिकली द नेटो. ओके, अब नाउ सिंस इट हैज ज्वाइंड द नेटो, नाउ यूएस हैज मोर कंट्रोल ऑन दिस पर्टिकुलर कंट्री. दे कैन इजीली डिप्लॉय द मिसाइल्स एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स. सो नाउ रशिया इज मोर कंसर्न्ड. रशिया इज नाउ मोर concerned. So that is why this particular article becomes important. All right, so here is the strategic location. So we need to understand the strategic location of the Finland. Okay, so now let us read further. So here, up to here, I think everybody must have understood. All right, so now this historical moment in NATO's history was full of symbolism, since NATO had clearly scored an additional point against Russia.
Now Russia is now 1 point less. Now means here the scoring the point basically is that now US has, or the NATO has become more strengthened because one more member has gotten into it. All right, so this is the meaning of this particular thing. Okay, I'm simplifying it so that you can understand in English only, right? Because Hindi anyway you'd be able to understand, right? So during the flag raising ceremony in Brussels, the NATO Secretary General Jens Stoltenberg, so here it will not be read as Stoltenberg, all right? So you see this L is silent here, okay? So Stoltenberg, so NATO's General Secretary Jens Stoltenberg said, Finland is safer and NATO is stronger with Finland as an ally. Ally means a friend or a partner, okay? So General Secretary जो हैं NATO के, उन्होंने बोला है, जो स्टोल्टनबर्ग सर हैं, उन्होंने बोला कि फिनलैंड इज सेफर, क्योंकि सेफ तो पहले से भी था वो, बट सिंस इट हैज जॉइंड द नेटो इट हैज बिकम सेफर, मींस मोर सेफ, ऑलराइट, एंड नेटो इज स्ट्रॉन्गर. नेटो वाज ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग, बट सिंस द फिनलैंड हैज जॉइंड इट हैज बिकम मोर स्ट्रॉन्गर, stronger. So likewise you should understand, alright, with Finland as an ally, alright. As predicted, Russian authorities have signaled possible countermeasures to the alleged assault on its security and national interest. So it is but natural that if the Finland, which is a very kind of neighboring country of the Russia, has joined the NATO, which is completely dominated by the US, and Russia and US doesn't have a good relationship, right? So it is but natural that Russian authorities will be having some kind of problems or the concerns related with their country's national interest, all right, and their security. So that is why they have flagged some kind of concerns. And what they said, that though they have blamed NATO for aggravating the tensions, means already there is a tension going on between Ukraine and Russia. Now Finland has already joined. Now Finland has also joined the NATO. All right. So now the more concerns for the Russia. So it means aggravating the tensions of the Russia. So this development must be seen as an independent decision of both Finland and Sweden, triggering largely by the Russian-Ukrainian conflict. Right, so we should understand that Russia and Ukraine का जो war start हो चुका है और चल रहा है बहुत दिनों से, ठीक है ना, उसी की वजह से Finland and Sweden were feeling more insecure. That is why it is their independent decision. Okay, to join the NATO so that they could feel safer. Okay, that is the meaning of this particular line over here. Okay. So now Finland is certainly not the first and will not be the last neighbor of Russia to join the alliance. So here it is very clear. I think everybody must have understood, but still I am making you understand that Finland is certainly, निश्चित रूप से, certainly not the first one. Okay, not the first one, and will not be the last neighbor, of Russia to join the alliance. Means all the Russian neighbors slowly are joining the NATO. Okay, basically. So here it is saying that many more members are to join the NATO in the coming time. All right. So more concerns for the Russia is going to happen. All right. So now here, up to here we have understood, right? Then here, before Finland's accession, countries such as Norway, okay, means before accessions of the Finland, means until the Finland was not accessed or was not included or was not inducted into the NATO, there were so many other countries which has already joined the NATO, and those countries' name was like Norway, which joined in 1949 and it was a founding member also. Latvia joined in 2004, Estonia joined in 2004, Poland joined in 1999, and Lithuania joined in 2004, were already a part of NATO, right? So up to here everything is clear, I hope, right? So in this scenario, Russia needs to learn how to navigate through these growing complexities. What are these growing complexities? Basically what is happening, that Russia is involved in the war with the Ukraine, okay, and now all the neighbors of the Russia are joining the NATO, basically US dominated military alliance, it is called the NATO, right? So they are joining this, right? So more tension. So these are the growing complexities, right? So Russia should know, Russia needs to learn how to navigate through, right? How to manage all these things, right? So basically this is the meaning of this particular line is like that, which it is partly responsible for, because Russia has attacked on the Ukraine. So that is why Russia is also part of these particular growing complexities. Okay, so now we have understood up to here. Okay, in 1948 the agreement of friendship, cooperation and mutual assistance was signed between the USSR and Finland. Okay, so here now we would be understanding that on the heading, whenever we were actually
reading the heading, so here the word is neutral. Okay, so now here we are going to get the answer that why this particular word was used in the heading and what is the specification and the requirement of this particular word in this particular paragraph here. All right, so we're going to understand this, right? So here mutual, so this particular, in 1948, the agreement of friendship, cooperation and mutual assistance. I'm reading it again and again so that you could listen more and more English and can understand, okay, what is the meaning of this particular paragraph. All right, mutual assistance was signed between USSR and Finland. Okay, outlining, so what was there basically in this particular assistance, okay, in this particular agreement. Okay, so outlining means बता रहा है, means explanation क्या है कि इसके अंदर था क्या. Finland's desire to stay outside the conflicts of interest between the great powers. Now what are the great powers? Russia, China, US, these are the great powers. So whatever is happening between them, Finland is not going to interfere in any possible way. All right, so this was there in this particular agreement which was got signed in 1948. All right, so now this line is clear. Up to here I think everybody is able to understand, right? So now this came to be known as Finland's neutrality. See, Finland's neutrality. So this particular agreement is also known as Finland's neutrality. So now this particular question may come into the prelims of the UPSC, okay, because this is very important, right? This is very important, right? So this can easily come, right? So you should be able to understand this, right? So here it is fine. Now what we need to understand, here now since all of these things happen, all these developments are happening, now what would change after this? Since the NATO has inducted the Finland, right? So now what would change after that, right? Given the circumstances, you should read the way I'm reading, just imitate the way I'm reading, okay? Given the circumstances, it's not decision, it's a decision made by Finland can be viewed as a rational choice. इसका मतलब क्या है, बहुत ही लॉजिकल चॉइस है, ठीक है ना, रेशनल चॉइस, बट इट्स कॉन्सिक्वेंसेस शुड नॉट बी एक्सेजरेटेड अननेसेसरी. मतलब अगर इसने ज्वाइन किया है, इफ द फिनलैंड हैज जॉइन्ड द नेटो, इट शुड नॉट बी अननेसेसरली सेड दैट व्हाई इट हैज जॉइन्ड, नाउ दिस विल हैपन, दैट विल हैपन, द वॉर विल एग्रीवेट. Unnecessary these things should not be exaggerated. All right, so now this is the meaning of this particular line up to here. Okay, after all, cooperation between Finland and NATO began as early as in 1994. So means the relationship of the NATO with the Finland was started as early as in 1994. So it is not that, you know, all of a sudden in 2023 on the 4th of April it has joined, right? So these processes were going on since 1994. All right, okay, with the partnership for peace. Okay, so this was the program under which NATO was engaged with the Finland, right? So Finland had the status of an enhanced opportunity partner. Okay, enhanced opportunity partner. So this is also very important. This can also be asked in the examination, so we must be very much aware of this, right? And contributed in a significant manner to the NATO-led cooperation in the Balkans, Afghanistan and Iraq. Okay, basically Finland has helped the NATO in the Balkans and Afghanistan and Iraq, wherever the US or the NATO forces were involved. So Finland has helped also, right? So Austria. So here notably the Finnish system of conscription मतलब क्या होता है, मतलब जैसे भर्ती होती है ना किसी चीज में, ठीक है ना. So notably मतलब बहुत ही importantly यहाँ पे है, Finnish system of conscription has generated sufficient resources for the army, navy and air force to act effectively in a war situation, right? So they have all these things at their disposal. All right, so now we can understand. Okay, so according to the constitution of Finland, every Finnish citizen is obligated, means responsible, okay, responsible to participate in national defense. Okay, whenever the need arises to participate in the national defense, all the Finnish citizens are obligated for this. All right, it is mandatory that every Finland citizen should be ready to serve in the army as and when it will be required, right? So the main rationale behind Finland's decision has been to receive additional security guarantees from the NATO. So here this is the most important point, that why NATO has inducted the Finland, or why Finland has joined the NATO, is that Finland wanted to receive additional security guarantees from NATO, right? So from NATO's founding treaty. So it binds the members together, committing them to protect each other and setting a spirit of solidarity within the alliance. All right, so on April 4, Mr. Stoltenberg once again reiterated that we stand together. So these are the lines that we can easily memorize, okay, and we can write them in examination also. So
reiterated that we understand, we stand together, we protect and defend each other, all for one and one for all. Okay, so in this sense, Finland's NATO membership can be viewed through the lens of conventional deterrence. Conventional एक्चुअली इसका मतलब ये होता है, हिंदी में मैं आपको बता दूं क्वेश्चन, कि आप जब किसी युद्ध में जाते हैं तो आपको लगता है ये स्ट्रेटजी है, ये रिस्क है और ये फायदे होंगे, तो फायदे कम होते हैं, नुकसान बहुत ज्यादा हो जाते हैं, राइट। तो ऐसे करके ये हमारा क्या है, एडिटोरियल। अब आपको उसको एज एन स्टोरी फॉर्म में याद करना, व्हाई फिनलैंड हैज ज्वाइंड, बिकॉज इट वांटेड मोर एडिशनल सिक्योरिटी गारंटीज फ्रॉम द नेटो, राइट, फ्रॉम द नेटो अरेंजमेंट। सो ऐसे करके आपको कुछ 1 2 4 5 पॉइंट आपको उसमें से निकालने, राइट। ऐसे करके आप याद करिए, चीजों को समझिए और उसको आप एक पीस ऑफ उस पे पेपर पे लिखिए। जितनी भी आपको इंग्लिश आती है, थोड़ी बहुत आती है, बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करें, स्टार्ट राइटिंग, जो भी वर्ड आता है, यू जस्ट राइट एंड सेंड मी ऑन दिस पर्टिकुलर व्हाट्सएप नंबर विद द स्क्रीनशॉट। आई विल बी करेक्टिंग यू एंड विल बी राइटिंग बैक ऑन यू, ऑलराइट। और उसके बाद जो भी आपको याद आया, जो भी स्टोरी, नाउ यू हैव एन स्टोरी इन योर माइंड, यू कैन स्पीक समथिंग, व्हाटएवर यू हैव लर्नड, आई हैव जस्ट स्पोकन टू यू इन द फॉर्म ऑफ एन स्टोरी, राइट। सो दैट स्टोरी स्टेज इन योर माइंड। तो ऐसे ही अपने लेवल को थोड़ा सा ऊपर करिए, अप करिए। आप ये मत सोचिए कि स्पून फीडिंग को आपको ही टेक्स टी, दे टेक टी, वी टेक टी, आई टेक टी, यू टेक टी, ऐसे करके जो स्मॉल सेंटेंस हैं ये आपको आते हैं, बट आपका लेवल ये है। 1 महीने अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, खुद से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, देन आपको खुद से आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जितना अगर अभी तक आपको ये चीज समझ में आई है और आपको सही लग रहा है, देन आप इस पर्टिकुलर चैनल को शेयर करिए हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के बीच में, जिससे से ज्यादा जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं उनका सिलेक्शन सिविल सर्विसेज में इंग्लिश मीडियम को चेंज करके हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।